Okay, so in the last session, we have talked about the unsupervised machine learning, basic principles of unsupervised machine learning, and how it is different than the supervised machine learning. So, the key difference is, as far as the supervised machine learning is concerned, the data set is labeled. And when we talk about unsupervised machine learning, the data set is not labeled. So, that means there is no dependent variable or the target variable. But in case of supervised machine learning, whatever data set we are having, that is having the dependent variables as well as the independent variable. That means input variables as well as the target variable. But that's the not the case with the unsupervised machine learning. We are only having the independent variables or the predictor variables or the features or the input variables. But the dependent variable is the one thing that we need to estimate or we need to calculate or we need to obtain using the clustering algorithms. Now, the very first algorithm that we have discussed was the k-means clustering, where the k stands for the number of clusters that we are going to form, and particularly speaking, centroid based method is used to calculate the different clusters. And also that was the partitioning based clusters. So we used to have some different partitioning, and that algorithm is purely a partitioning based clustering algorithm. Now, in this session, we are going to talk about new algorithm for the clustering, which is hierarchical clustering algorithm. Now, this algorithm is something like a tree-like structure which we are going to generate. That structure is known as dendrogram, and shortly we'll understand what is that particular graph. So it forms some kind of hierarchy and some hierarchical structure we are going to establish for our data set, and that's how the name hierarchical clustering algorithm. So basically it is going to make a tree like structure on our data set, and that tree like structure is called as dendrogram. The tree shaped structure that we are going to create for our data set is now called as dendrogram. Now, there are two major approaches as far as this hierarchical clustering algorithm is concerned. Number one is agglomerative clustering, and number two is divisive hierarchical clustering algorithm. Agglomerative hierarchical clustering algorithm, that's the number one approach of having this kind of clustering, and number two is divisive clustering. Now, what is this agglomerative and what is this divisive? So, as far as the agglomerative is concerned, it is bottom-up approach. So, we will start from the bottom and we will move towards the top. So, that's how the name agglomerative clustering. And in case of divisive clustering, this is top-down approach. So, we'll start from the top and we will go down to the bottom. So, this is how the two different approaches are there: agglomerative clustering and the divisive clustering. And particularly speaking, we are going to focus on the agglomerative clustering approach. Now you will ask why this is required, why hierarchical clustering is required, as there is k-means clustering algorithms are there, and we have obtained quite good results using the k-means clustering. So as far as the k-means clustering is concerned, the number one problem is it needs the value of k, and it should be determined before we actually apply the algorithm. So that's the problem, and for that purpose we need to have iterations. We need to apply k-means clustering algorithm for so many times, let's about 10 number of times, to obtain the value of k. The hierarchical clustering, on the other hand, does not require the value of k at the beginning, or the predetermination of the value of k is not required. So that doesn't mean that the hierarchical clustering don't need the value of k. It will work without the k. It definitely, as it is clustering, the k means number of clusters. So it still needs the value of k, or the number of clusters, in a simple language we can say. So it still requires the how many number of clusters you are going to form, and how many clusters you need, that kind of parameter as an input. But predetermination is not required before we start the algorithm. It's not required. So we can define later on, or we can use as per our requirement. Now, the agglomerative hierarchical clustering algorithm, so this is the one of the important algorithm
which follows the bottom up approach. So bottom to up approach. Now here what is done? Now let's say you are having 10 different data points. Now we will consider each and every data point as a separate cluster. So there will be 10 clusters at the beginning, and then we will try to combine two different data points or two close data points together. So now the clusters will be reduced, so it will be forming some sort of hierarchy. Okay, so this is bottom up approach, which is agglomerative hierarchical clustering. So we'll start from the bottom. So let's say in our yesterday's or the last session's database we are having 200 customers. So initially we will assume there are 200 number of customers are there. That means 200 number of clusters, so every data point is a separate cluster. Then we will try to combine two close data points together to form one cluster. So now maybe by combining two together it will be around 100 number of clusters. Now again we will be combining two clusters together, again there will be 50 number of clusters, again there will be 25 number of, and so on. So we can form different clusters by combining two different data points together. So this is how the bottom up approach. So we'll start from the bottom. We will consider whatever number of inputs you are having, whatever number of data points you are having, that many clusters we are having initially, and then we will try to reduce the number of clusters, and at the end we will stop when we will get, or we will be there only with, or will remain with only one cluster. So that will be our final steps. That's our bottom up approach. And in case of top down approach, which is the division clustering, we will start from the top, and then we will initially entire data we will consider one single cluster. That means 200 number of customers we are having. So we'll consider this is one cluster, and then we will divide that into two clusters. Let's say 100. Again we will subdivide that, so it will become four different clusters. Again we are going to divide, so at the end we will be having 200 number of clusters. So that is the uh, top down approach. So we'll start from the single cluster, and we will end up with the maximum number of clusters. And in case of bottom up approach, which is agglomerative clustering, we will start from the 200 number of clusters, max number of clusters, and we will end up with the uh, one single cluster at the end, and at that point we will be stopping. Okay, so now in order to understand it in the simple way, let's understand a example with the help of some example. So let's say we are having this six number of data points. So that means on the x-axis we are having the income, and on the y-axis we are having the spending score, or how much that particular person is spending. So based on that we have plotted this data, and these are six number of points, and now every point is a separate cluster. Now as this is marked with different colors, so we will consider each and every point is a separate cluster. In the yesterday's practical we started with number of points, and then we started combining the points and to form the clusters. So what we'll consider, each and every point is a separate cluster. नाउ यहाँ पे वी आर हैविंग सिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे अलग अलग क्लस्टर है, इस तरह से हम इनिशियली एज्यूम करेंगे. दिस इज बॉटम अप अप्रोच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये दिस इज क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री, क्लस्टर फोर, क्लस्टर फाइव एंड क्लस्टर सिक्स. तो इस तरह से वी विल कंसिडर दीज आर सिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स. Now in the next step we will try to combine two different clusters together which are very close to each other. So we'll try to find out the distance between the two clusters or the data points, and जिनका distance close है या फिर कम है, that will be formed. So यहाँ पे clearly अगर ये दो points को आप देखोगे, so these two points are very much close to each other, तो हम इनका एक cluster बनाएंगे. So this वाला part will become one cluster. Similarly next step में ये दो क्लोज लग रहे तो हम इसका एक क्लस्टर बनाएंगे. नेक्स्ट टाइम दिस पॉइंट इज क्लोज टू दिस क्लस्टर, तो हम इन तीनों का और एक क्लस्टर बनेगा. फिर ये तीनों का और एक क्लस्टर बनेगा, और एट द एंड ये सब का एक क्लस्टर बनेगा. तो दिस इज बॉटम अप. ओके, सो लेट्स in the second case, now as we see this is now marked as one color, orange color. So these two points are very much close to each other, तो इनका एक cluster बन गया. Similarly these two points are now marked as blue. So as these are very close to each other, तो इनका एक cluster बन गया. तो next step में we will add this point to this cluster, that will be next cluster. तो इस तरह से हम उसके मल्टीपल क्लस्टरिंग करते जाएंगे. सो नाउ दिस इज और एक पॉइंट इसमें ऐड हो गया तो और एक क्लस्टर बन गया.
फिर दिस पॉइंट विल बी एडेड दिस थिंग, तो एक क्लस्टर बन गया. एंड एट द एंड वी विल कम अप विथ द वन क्लस्टर. तो एट इनिशियली वी वेर हैविंग 6 क्लस्टर्स, तो अगर आप फर्स्ट केस में जाओगे, वी वेर हैविंग 6 क्लस्टर्स. नाउ वी आर हैविंग 5 क्लस्टर्स. नाउ वी आर हैविंग 4 क्लस्टर्स. नाउ इन दिस डायग्राम, out of 4 we made 3 clusters, then 2 clusters, and finally 1 cluster. So this is how the bottom to top or bottom up approach will work, or the agglomerative clustering will work. Now here the critical point is finding the distance between two data points or two clusters. That is very important. So this distance is actually important for us, because we need to know which two clusters are close to each other, and accordingly we are going to add the data points, or accordingly we are going to form a linkage between all those clusters. अगर मुझे पता चलता है कि ये दो clusters, this cluster and this cluster, ये single dot वाला cluster, ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा close है than this one, तो मैं इनका cluster form करूंगा. ये वाला point इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ना कि इसके अंदर ऐड किया जाएगा. तो ये फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, and there are various methods that can be used to find the distance between two different clusters. तो उसके अंदर single linkage is one method which is used to find the distance between two clusters. तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो closest distance है वो consider किया जाएगा between these two क्लस्टर. दैट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस द फर्दर डिसीजन विल बी मेड. The next one is the complete linkage. So in this particular case, the first and the last, so this is the farthest distance, actually the longest distance between the two clusters will be considered to make decision. The average linkage के अंदर average लिया जाएगा distances का सारे clusters के अंदर, और that will be used to form the linkage. And the centroid linkage, in which the center point will be considered, and that will be considered to form the linkage between the two different clusters. So likewise it's going to work. We are going to form the different clusters, and उसका एक हमें finally बन के मिलेगा एक dendrogram, और उसका एक tree like structure बनाएंगे, and that tree like structure is known as dendrogram. So finally how it works, so consider we were having 6 number of points: P1, P2, P3, P4, P5, and P6. Okay. So now initially we know that P2 and P3 are very close to each other. तो हम इन दोनों का एक अंदर वाला जो डॉटेड है वो क्लस्टर बनाएंगे. तो अगर आप राइट साइड में देखोगे तो P2 एंड P3 को कंबाइन करके एक क्लस्टर बनेगा. सो दिस विल बी ए क्लस्टर between P2 and P3. And this vertical thing represents the vertical, जो भी ये लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे, this represents distance, इन दोनों के बीच में का distance, P2 and P3 के बीच में का जो कुछ भी distance है, that is this vertical line. Okay. Now after linking that हमें ये भी पता चलता है कि P5 and P6 are very close to each other, तो हम उसका एक डिस्टेंस और उसका एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे. सो दैट इज दिस क्लस्टर, तो उसका एक क्लस्टर बन गया P5 एंड P6. नाउ वी नीड, उसके बाद अगर हम थोड़ा अप जाएंगे, सो नाउ P2 और P3 का जो क्लस्टर बना था उसको ये P1 का क्लस्टर क्लोज है, तो ये जो क्लस्टर बना था इसके साथ हमने ये जोड़ दिया. तो नाउ इस क्लस्टर का इस क्लस्टर के साथ का जो भी डिस्टेंस है वो ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट यूक्लिडियन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स, वो वाई एक्सिस पे होगा, और एक्स एक्सिस पे डेटा सेट या फिर उसके पॉइंट्स होंगे. तो ये एक क्लस्टर बन गया. फिर से हमें पता चला कि ये जो P5 एंड P6 है उसको जो क्लोज क्लस्टर है वो है P4, तो हम P4 को कंसिडर करेंगे. सो दैट विल बी द क्लोजेस्ट क्लस्टर फॉर दिस P5 P6 क्लस्टर, तो वो हम उसमें ऐड करेंगे. अगेन दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू क्लस्टर्स. एंड फाइनली ये जो क्लस्टर बनेगी एंड दिस क्लस्टर, इन दोनों का एक ही क्लस्टर हम बनाएंगे, एंड दैट विल बी दिस. तो इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस, जो वर्टिकल लाइन है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. तो अराउंड 25 के करीब उसका डिस्टेंस है. अगर आप पहला P2 P3 का जो डिस्टेंस कंसिडर करोगे तो 5 के अराउंड है.
P5 P6 का डिस्टेंस 6 के अराउंड है, एंड दिस P1 एंड P2 P3 का जो डिस्टेंस आएगा वो अराउंड 10 के अराउंड है, और वो भी सिमिलरली। एंड फाइनली ये जो दो क्लस्टर्स हैं, जो कि ये P4 P5 P6 और P1 P2 P3, इन दो क्लस्टर के बीच में का है, दैट इज अराउंड 25। ओके, तो वो डिस्टेंस सबसे लॉन्गेस्ट है। तो नाउ हमें फाइंड आउट करना होगा कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ के या फिर क्लस्टर्स कितने होंगे। क्या मैं इतने 6 नंबर ऑफ क्लस्टर्स कंसिडर करूं? शुड आई कंसिडर ओनली 4 क्लस्टर्स? शुड आई कंसिडर ओनली 2 क्लस्टर्स? or should I consider 3 clusters? So it's up to the user as per the business requirement, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट किया जाता है। एंड सेकेंडली, इस वाले डायग्राम को आप कहाँ से भी कट कर सकते हो। यहाँ से अगर कट किया तो मुझे 2 क्लस्टर्स मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे कट किया तो मुझे 4 क्लस्टर मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने कट करता हूँ तो मुझे 6 नंबर ऑफ क्लस्टर्स आई विल बी गेटिंग। सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने मिलेंगे वो डिपेंड करेगा आप इस वाले जो डेंड्रोग्राम है या फिर जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहाँ पे कट करते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे कट किया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ 2 क्लस्टर मिलेंगे, क्योंकि ये एक क्लस्टर हो जाएगा और ये एक क्लस्टर हो जाएगा। So that will understand with the help of the real example in the Python code. We are also going to create such kind of dendrogram in the Python. Okay, but यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए वो डिसाइड करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि जो लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन जो है वो सिलेक्ट करना है, एंड दैट शुड नॉट बी कटिंग और टचिंग एनी हॉरिजेंटल बार। तो वो किसी हॉरिजेंटल बार को कट नहीं करना चाहिए। तो दैट थिंग वी विल कंसिडर एज अ लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल लाइन, जो कि किसी भी हॉरिजेंटल बार को टच नहीं कर रही या फिर कट नहीं कर रही, that we will consider as a distance for the calculation of that thing. So according to that, as per that, we will be getting some number of clusters. So जितने भी clusters हमें चाहिए वो clusters हमें यहाँ पे मिलेंगे, and based on those clusters we will be dealing with our data. तो वो हम with the help of some real world example we will try to understand कि how many clusters we are going to form. So now we'll be discussing a Python code for this implementation, and this is how the bottom up approach will work. Now, in order to have this Python implementation for the same, we are still having the same database which we are going to use in the previous case, or we have used in the previous example, that is mall customer. So let us see this database one more time. So here we are having the customer ID, gender, age, annual income, and their spending score as an input. तो इस बार भी हम सिर्फ दो ही कॉलम कंसिडर करेंगे, एनुअल इनकम एंड द स्पेंडिंग स्कोर। तो एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर को कंसिडर करके एक 2D ग्राफ भी बनेगा हमारा। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो let's talk about this thing with this data set, and now we will open the Visual Studio IDE in this folder. So first of all I will be opening this VS Code in that folder so that I will be getting access to the database file. Now this was our yesterday's practical, which was all about the k-means clustering, and now we will create one more new Python code, that is, let's say, hierarchical clustering analysis .py, sca.py. Okay, any name you may give, but I'm giving this sca. And let us zoom in this area. Okay, so now it's clear. So here we are supposed to start with this hierarchical clustering algorithm, or particularly speaking, agglomerative hierarchical clustering algorithm. So now in this particular case, we are going to use the similar steps that we have used in the previous example, and same step but different approach to calculate or to find the k number. And as it is very clear that it's not required from the beginning itself to know the k number. It can be decided later on, and after that the algorithm can be trained. So step number one, as usual, is all about loading the required libraries.
libraries and packages, we can say. And one such package is numpy. So import numpy as np, import pandas as pd, and import matplotlib.pyplot as plt. Okay. So now this is our number one step. Number two step, loading the data set. So in this case, we are going to load our data set, and we will be creating a data set variable. And as we know, the data is available in a CSV file, that is mallcustomers.csv. So we'll be using the pandas library here. So pd dot read CSV function. And here we are going to mention the path or the name of our file. So it's small underscore customers dot csv. That's what we will load, and we can see the part of it by data underscore set dot head function. So we'll be able to print some portion of our dataset, particularly only first five rows by as we are using the head. Okay, if you use tell, then last five will be printed. And if you simply print the dataset, it will print first five and last five rows. And if you print dataset dot to string, then it will be printing the entire dataset in your Python terminal. And that we have understood in while discussing the pandas library. We have understood that part. Now if we run this one, so here there is some mistake in the spelling. So it's mat plot lib. So here is the spelling error. So matplotlib. So let us fix that, and let's run one more time. Now here we go. So now we are getting the customers data, and we are getting first five customers or the first five rows from our data set. Now the next step is extracting the, that will be our step number 3, and that will be extracting the independent variables. Okay, now as far as the unsupervised machine learning is concerned, there will be no dependent variables. So whatever data is having or you are having, that is actually having only independent variables. But still we are talking about extracting. That means sometimes not all the variables are useful. So some of the variables could be removed and they may not be having any importance. So in that case, we can eliminate all such variables. So that's how extracting the independent variable. So I am interested only two variables this time, annual income and spending score. That's how I am eliminating all such variables or all the rest of the variables. So now in this particular case, X will be this data underscore set dot this allocation, and then I need to mention the all the rows but the column only 3 and 4. Okay, and of course dot values as we are taking from the pandas data frame. So this is our independent variable. So column number 3, that is this annual income, and column number 4, that is the spending score. These two columns will be considered and that will be used for further processing. Now here comes the next step, and as usual in the previous case, we have used the k number. So this is the finding the optimal number of clusters that we need to make. Now as this step is not mandatory, and actually it's even not required, but you can directly pass some number to your clusters and you can find out. But in previous case, we need to have the k-means clustering algorithm repeated over again and again or again and again,
and at the end of that we used to find out the which will be the best k number. But in this case we are not going to train our model again and again to find the k number. Instead we are going to use some different library. So for this we are going to use the scipy library. So import scipy dot cluster dot hierarchy as, let's say, scipy cluster hierarchy, okay, SCH. Okay, so we'll import that as a short form. Otherwise this will be a lengthy name, huh? Scipy dot cluster dot hierarchy as SCH, so that will be scipy cluster hierarchy. That will be a short name to that, so that we will be able to load that thing in our code. Now this library will be used to have a dendrogram. And now you'll say, do I need to install this library again, like pip install scipy or something like that? So actually not required. While installing the matplotlib library, this library gets auto installed, so it will be automatically there in your Python environment even if you do not have the scipy library as a pip install command by the pip install command. So it will be there in your environment, so don't worry about this library. So this library we are going to use to plot a dendrogram. Now dendrogram is all about that tree like structure which we have seen. Okay, तो वो dendrogram यहाँ पे हम plot करेंगे. Now we'll create a variable called, let's say, dendro. कुछ भी कर सकते हो variable. I'll be using dendro name, and then sch dot dendrogram. तो इसके अंदर वी नीड टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा. सो जिस डेटा का आप डेंड्रोग्राम फाइंड आउट करना चाहते हो उस डेटा को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा. तो वो जो डेटा है ना, वो दैट इज आवर एक्स विच फॉर विच वी नीड टू फाइंड आउट द डेंड्रोग्राम. लेकिन उसका लिंकेज पता करना होगा कि कौन सा किसको लिंक्ड है, एंड उसके जो डिस्टेंसेस है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. So that's all we will calculate, and for that again we'll be using this library sch dot, that means this scipy cluster hierarchy library, and from that we will be using the linkage function. And the linkage function के अंदर हमें देना होगा किसका लिंकेज फाइंड आउट करना है. तो हमें x का हमारा जो डेटा है, लिंकेज डिस्टेंस. ओके, लिंकेज इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स. वो जो लिंकेज होता है या फिर जो दो क्लस्टर का हम लिंकिंग करने वाले हैं, दैट्स दैट थिंग, लिंकिंग. एंड दैट डिस्टेंस फाइंड आउट करके उसका एक डेंड्रोग्राम बनाना है. सो डेंड्रोग्राम फंक्शन विल बी representing it mathematically, or it will be doing a plotting kind of thing. So it will be plotting the structure on graph. तो वो काम करेगा डेंड्रोग्राम. जैसे हम plt डॉट प्लॉट लिखते हैं तो वो प्लॉट कर देता है, वैसे sch डॉट डेंड्रोग्राम लिखोगे तो इट विल बी प्लॉटिंग अ डेंड्रोग्राम. किसका डेंड्रोग्राम करना है? ऑब्वियसली x का. तो x का जो भी लिंकेज है, क्लस्टर का जो भी लिंकेज है, तो वो लिंकेज हमें मिलेगा एस सी एच डॉट लिंकेज फंक्शन से. तो जो मैंने पीपीटी में या फिर स्लाइड में, सो अदरवाइज आई विल शो यू. तो वॉट एवर दिस लिंकेज इज हैपनिंग बिटवीन P2 P3 P1 P2 एंड ऑल दो सच लिंकेज, तो ये सारा जो लिंकेज है, दिस ऑल लिंकेज is nothing but the linkage of, or the what for that we can use the some simple linkage or single linkage or even the average linkage और इवन दी फार्दर डिस्टेंस वी कैन कंसिडर. तो सो मेनी टाइप्स जो हमने देखे, सेंट्रॉइड लिंकेज, तो उससे एक लिंकेज बनेगा. ये जो लिंकेज है उसका हमें डेंड्रोग्राम प्लॉट करना है. तो ये P2 P3 ये सारा लिंकेज का ये डेंड्रोग्राम हमें प्लॉट करना है. सो नाउ इन ऑर्डर टू प्लॉट दैट लिंकेज वी विल बी यूजिंग डेंड्रोग्राम फंक्शन, और लिंकेज फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग लिंकेज फंक्शन. नाउ ये जो लिंकेज फाइंड आउट करना है वो किस मेथड से करना है. ओके, तो ये क्या सिंगल मेथड से करना है या फिर एवरेज मेथड से करना है या फिर सेंट्रॉइड मेथड से करना है, तो अलग अलग टाइप है. तो उसका जो मेथड है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. ये मेथड आप कुछ भी कर सकते हो, डिफॉल्ट उसका सिंगल है. नाउ आई एम यूजिंग वार्ड for this practical, so which is considered the most accurate way of finding the linkage over the other methods and which is more efficient. Now ward क्या है? Ward is the name of the scientist or the mathematician who has done some research
in finding the linkage distances and all. So he has proposed some formula to find out the linkage distance. जैसे मैंने सेंट्रोइड का बताया कि सेंटर पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो सेंट्रोइड होगा, सिंगल मतलब जो क्लोजेस्ट होगा वो होगा, एवरेज मतलब एवरेज लिया जाएगा। तो वैसे वॉर्ड हैज प्रपोज सम फार्मूला, सम मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द लिंकेज डिस्टेंस। तो वो उसका मेथड होगा कि लिंकेज जो है वो वॉर्ड मेथड से फाइंड आउट किया जाएगा, एंड दैट फार्मूला विल बी यूज टू फाइंड आउट द लिंकेज डिस्टेंसेस। तो हमें यहाँ पे लिंकेज एक्स का बनाना है और उसके डिस्टेंसेस हमें मिलेंगे। तो एक बार हमें डेटा एंड उसका डिस्टेंसेस पता चलते हैं, तो नाउ वी कैन फॉर्म अ डेंड्रोग्राम। तो इससे हमारा एक डेंड्रोग्राम बनेगा और वो प्लॉट हो जाएगा। तो अब ये प्लॉट भी होगा तो हम इसको टाइटल दे सकते हैं। सो पी एल टी डॉट टाइटल से हम, ओके, वी आर नॉट डूइंग पी एल टी डॉट प्लॉट, कीप इन माइंड, बिकॉज ऑलरेडी द प्लॉटिंग का जो काम है वो डेंड्रोग्राम कर लेगा। वी आर जस्ट गिविंग द एक्स लेबल एंड वाई लेबल टू दैट ग्राफ विच विल बी जनरेटेड। तो टाइटल हम देंगे कि डेंड्रोग्राम प्लॉट, क्योंकि ये डेंड्रोग्राम प्लॉट है। तो एक्स लेबल भी हम उसको देंगे, तो पी एल टी डॉट एक्स लेबल, तो हम इसको एक्स लेबल देंगे। सो एक्स लेबल इसका होगा कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है या फिर कस्टमर्स, हम सिंप्लिसिटी के लिए या हम ये कस्टमर्स का ही डेटा यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर्स है। और पी एल टी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल एक्चुअली हमारा है डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर इफ यू वांट टू बी मोर टेक्निकल, so that is our Euclidean distance, and at the end plt dot show, जिससे वो ग्राफ दिखेगा। तो यहाँ पे डेंड्रोग्राम फंक्शन विल बी प्लॉटिंग द डेंड्रोग्राम और ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस लिंकेज, एंड लिंकेज ऑफ एक्स, एक्स मतलब इनपुट डेटा, जो डेटा पॉइंट्स है उसका क्लस्टरिंग होगा, बॉटम अप अप्रोच होगा, तो उसका जो भी लिंकेज है वो प्लॉट किया जाएगा, डेंड्रोग्राम प्लॉट किया जाएगा। एंड एक्स लेवल विल बी कस्टमर्स, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इनिशियली जो बॉटम में होंगे तो टोटल 200 नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनेंगे एट द बॉटम लेवल, फिर अब जाके उनका क्लस्टरिंग किया जाएगा, एंड so many clusters we will be reducing, and at the end we will remain with one single cluster. तो let's run this and we will find it out कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो after running this important code, now we are getting this important diagram called dendrogram plot। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है जो यहाँ पे हमें मिला है। तो अगर आप देखोगे ना ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 200 अपने पास कस्टमर थे, 200 नंबर ऑफ कस्टमर का डेटा अपने पास था। तो एट द बॉटम साइड वी आर हैविंग 200 नंबर ऑफ कस्टमर्स, और वो 200 का डिस्टेंस जो होगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली एक ही क्लस्टर में एक ही पॉइंट है, तो किसी दूसरे के साथ उसका डिस्टेंस मेजर करना है ही नहीं। तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो क्लस्टर है, एक ही डेटा पॉइंट है उस क्लस्टर में। अगर 200 क्लस्टर्स अगर हम बॉटम में यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो, so in that case we will be having zero distance between the clusters। लेकिन जैसे जैसे हम क्लस्टर को एक दूसरे के साथ मर्ज करना चालू करेंगे, दो पॉइंट्स को, दो कस्टमर को एक साथ मर्जिंग करना चालू करेंगे, तो पहले मतलब इनिशियल एजम्पशन क्या होगा कि जो हमें क्लस्टरिंग करना है या फिर कस्टमर के जो ग्रुप बनाने हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, जिनका एक्सपेंसेस अलग अलग। कल हमने देखा कि कुछ कस्टमर ऐसे थे कि जिनका इनकम ज़्यादा है और स्पेंडिंग भी ज़्यादा है। कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनका इनकम मॉडरेट है, स्पेंडिंग भी मॉडरेट है। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिनका इनकम कम है, स्पेंडिंग भी कम है। कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनका इनकम कम है लेकिन स्पेंडिंग ज़्यादा है। कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जिनका इनकम ज़्यादा है लेकिन स्पेंडिंग कम है। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर है। तो इनिशियली हम एज्यूम करेंगे कि वी आर हैविंग 200 नंबर ऑफ टाइप्स कस्टमर। तो पहले हमें 200 नंबर टाइप के कस्टमर्स हमारे पास है, 200 टाइप्स के इनिशियली। तो फिर हम आगे चल के क्या करेंगे, एक लेवल ऊपर आएंगे और सोचेंगे कि कौन से दो कस्टमर एक जैसे है, तो उन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे।
तो फिर ऐसे दो 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 का एक ग्रुप बनाते जाएंगे, सो एट द एंड वी विल बी फाइंडिंग। तो हर एक का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, या फिर हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे, तो लेट्स से अगर हम उससे 200 में से 100 नंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे, तो हर एक ग्रुप में दो दो कस्टमर्स होंगे। तो हो सकता है किसी ग्रुप में काफी सिमिलैरिटी है, किसी ग्रुप में काफी कम सिमिलैरिटी है, मतलब किसी का डिस्टेंस 1 है, किसी का 2 है, दैट्स ऑल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर 100 बनने के बाद फिर हम सोचेंगे कि कौन से दो को फिर हम कंबाइन कर सकते, तो उसके साथ हम 50 बनाएंगे। तो उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। तो अगर इस वाले डेंड्रोग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कट करेंगे ना, एकदम बिगिनिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, एट द पॉइंट वेर एवर आई एम मूविंग दिस कर्सर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे है एक सिंगल वर्टिकल बार, वर्टिकल लाइन विच इज हैविंग सम डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो दो क्लस्टर बनेंगे, एक तो ये बड़ा वाला क्लस्टर और इस तरफ, क्योंकि जितने वर्टिकल लाइंस होंगे उतने क्लस्टर्स। तो अगर यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास बनेंगे दो क्लस्टर्स, आई विल बी हैविंग टू क्लस्टर्स ओनली। तो अगर और थोड़ा नीचे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लेट्स से 300 और 350 के बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं बिटवीन 300 एंड 350, तो इन दैट केस आई विल बी हैविंग थ्री क्लस्टर। थ्री क्लस्टर्स क्यों? क्योंकि अगर उस इन दैट पर्टिकुलर केस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तीन वर्टिकल लाइंस को कट करेंगी। इट विल बी पासिंग थ्रू थ्री थ्री वर्टिकल लाइंस। एंड सेकेंड थिंग, इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी इंटरसेक्टिंग एनी हॉरिजॉन्टल बार। तो यहाँ से 300 और 350 के बीच में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, तो डेफिनेटली वो किसी भी हॉरिजॉन्टल बार को टच तो नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे तीन वर्टिकल लाइंस होंगे, तो तीन क्लस्टर्स हमारे बन सकते हैं। तो आप हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा है। सो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ज्यादा वो क्लस्टर्स अलग अलग है, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स कि क्लोजनेस ऑफ द क्लस्टर्स। अगर वर्टिकल डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब है कि वो जो क्लस्टर्स है वो एक दूसरे के साथ काफी क्लोज है। वर्टिकल डिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो दो जो क्लस्टर्स है वो एक दूसरे के साथ काफी दूर है, और एक दूसरे से काफी दूर है। तो इसका मतलब वो होता है। तो हमें क्या करना है कि ज्यादा और कौन सा ऑप्टिमल नंबर होगा, कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें का ये एक चीज करनी होगी, दैट विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से लाइन का है वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसका है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो ये तो काफी छोटा है वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद अगर मैं ये कंसिडर करूंगा, दिस लाइन काफी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर ये कंसिडर करेंगे, सो दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगेन, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप ये लाइन कंसिडर करोगे, दिस लाइन, सो दिस इज हाउ हैविंग द हाईएस्ट डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस, तो ये लाइन को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्टेंस वन विच कैन बी इग्नोर्ड। दिस इज डिस्टेंस टू विच इज अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट, दो नंबर का हाइट डिस्टेंस है, उसको भी हम इग्नोर कर लेंगे। और दिस इज डिस्टेंस थ्री, जो कि काफी कम है, स्टिल इट इज वेरी स्मॉल, सो वी विल इग्नोर। दिस इज डिस्टेंस फोर, तो ये फोर्थ डिस्टेंस है। नाउ दिस फोर्थ डिस्टेंस is quite very high. This is the highest distance we can consider. तो अगर मैं इस फोर्थ डिस्टेंस से गुजरती हुई कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा, दैट मीन्स लेट्स से 150 जो इक्लूडियन डिस्टेंस है उसमें से पास होती हुई अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, तो डेफिनेटली वो किसी भी हॉरिजॉन्टल बार को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैं ये लाइन यहाँ से 150 में से गुजरते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन एक, दो, तीन, चार और पांच, 5 नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स वी हैव टू चूज
5 number of clusters. Okay, so that's the method of finding how many clusters you need. ओके आप डेफिनेटली यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो शायद ज़्यादा क्लस्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स इट मे इंटरसेक्ट सम लाइन, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस जो है वो काफ़ी छोटे हैं। अगर छोटे डिस्टेंसेस है दैट मीन्स दो क्लस्टर के बीच में का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो दैट मीन्स दे आर वेरी मच सिमिलर, तो वहाँ पे क्लस्टर बनाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस इज द हाईएस्ट डिस्टेंस, सो दैट मीन्स द क्लस्टर्स आर वेरी मच लॉन्ग टू ईच अदर, and that means the distance between two clusters is quite significant or high। तो हम in that case consider कर सकते हैं कि ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। क्यों? क्योंकि दो ग्रुप के बीच में का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर दो ग्रुप के बीच में का डिस्टेंस कम है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज भी कर सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस ही कम है, उनके पास काफी सिमिलर फीचर्स है, तो उनको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस अगर ज्यादा है, सो वी कैन कंसिडर कि उनमें काफी डिसिमिलरिटी है, सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उसको क्लस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो काम ये करना है हमें कि मैक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये हो गया अपना मैक्स वर्टिकल डिस्टेंस। तो उस मैक्स वर्टिकल डिस्टेंस को 90 डिग्री या फिर उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि वो इट शुड नॉट टच, मतलब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकता। यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा माउस कर्सर है वहां से अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है, काफी लंबा है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकता फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एक दो, और ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्लस्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ड्रॉ करते टाइम मुझे यहाँ से ड्रॉ करना होगा फ्रॉम दिस, and in that case it is now taking 1 2 3 4 number of 4 and 5 number of clusters into consideration। तो in that case it is going to take 5 number of clusters। तो इससे हमें पता चलेगा कि k का जो वैल्यू है वो हमारा 5 होना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो हमारे 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग डेटा हो सकता है। अगर आप कंसिडर करोगे कि दिस इज क्लस्टर 1, तो उसके अंदर कम कस्टमर्स है, क्लस्टर नंबर 2 के अंदर भी कम क्लस्टर्स है, क्लस्टर नंबर 3 के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपको नजर आए, यहाँ से लेके यहाँ तक के कस्टमर्स क्लस्टर नंबर 3 के अंदर है। तो क्लस्टर नंबर 3 के अंदर ज्यादा कस्टमर्स है। तो फिर एक क्लस्टर नंबर 4 के अंदर भी यहाँ पे मॉडरेट नंबर ऑफ क्लस्टर्स है जो कि ग्रीन कलर्ड है, एंड ये जो रेड कलर्ड है दैट इज क्लस्टर नंबर 5 बन जाएगा, जिसके अंदर भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स है। लेकिन यहाँ से क्लस्टर नंबर 3 के अंदर ज्यादा कस्टमर्स होंगे, तो अलग कैटेगरी बनेगी। सो दिस इज हाउ it can be considered or it can be interpreted, and from this graph this is how we can find out the number of clusters। एक बार हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल गए तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रेनिंग द मॉडल या फिर फिटिंग द मॉडल। तो ये जो मॉडल है दैट विल बी अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग मॉडल। सो फिटिंग एंड प्रिडिक्शन भी हम इसके साथ करेंगे। सो फिटिंग द हायरार्किकल क्लस्टरिंग मॉडल, तो इसको फिट करेंगे। तो इसको फिटिंग करने के लिए अगेन विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द sklearn लाइब्रेरी डॉट क्लस्टर इंपोर्ट एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। ओके, सो दैट्स हाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। और ये जो लाइब्रेरी है या फिर ये जो क्लस्टरिंग मेथड है दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेक नाउ। इसका एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ओके, SC इक्वल्स टू दिस एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। इसके अंदर हमें देना होगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, तो 5 होंगे। ओके, सो आई विल बी हैविंग ओनली 5 क्लस्टर, दैट्स इट। तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो है वो सेम ही है। तो जो लास्ट मेथड वॉट एवर वी हैव सीन, सो दैट थिंग एंड दिस थिंग इज completely सेम, only thing is that method is different। now here we need to have 5 number of clusters। in the previous case also we have considered 5 number of clusters। तो यहाँ पे भी even we have used this dendrogram technique to find out the number of clusters or optimal number of clusters
still it has predicted that we should have 5 number of clusters. And as we have seen from the previous case also using k-means clustering, there we have used the elbow method to find out the number of clusters. And elbow method has also suggested that you should have 5 number of clusters. So now this time we are having 5 number of clusters, and now we are ready to fit and predict the dependent variable. So now यहाँ पे मैं cluster id वेरिएबल बनाऊंगा. सो क्लस्टर आईडी इक्वल्स टू sc dot fit predict. Okay, that will be a prediction, and that's going to happen on the x, that is our data set. So these x will be passed through this agglomerative clustering with number of clusters equal to 5, and then we will be getting cluster ids. So at the end we will be getting cluster ids. So if you want to print this cluster ids, definitely we can print the cluster ids, and we can see that what kind of results we are getting. So now here is the dendrogram which is just about to produce. It's loading. Now the dendrogram has loaded. Once you close the dendrogram, you will find that these are the cluster numbers that we are getting in the cluster ID. Sometimes 4, 3, 4, 3, and quite similar result we have obtained when I compare this thing with the k-means clustering. In the k-means clustering also we used to get the same result. मे नॉट बी एग्जैक्ट सेम बट क्वाइट सिमिलर रिजल्ट. हो सकता है कि एक दो पॉइंट इधर उधर होंगे, एक दो डेटा पॉइंट इधर के उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वाइट सिमिलर रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर ऑल्सो. नाउ आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग द cluster id. Now the next step. So this was our step number 4, which was this fitting the hierarchical clustering model. Now the next important step, which is the step number 5, is the visualization. Okay, so for that purpose we'll be taking help of matplotlib library. So this will be visualizing the results. Okay, so that's it. तो यहाँ पे भी हम वही फंडा यूज करेंगे जो लास्ट टाइम हमने यूज किया. लास्ट टाइम आई हैव यूज वाई प्रेडिक्शन फंक्शन और वाई प्रेडिक्शन वेरिएबल. सो उसके वजह से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लस्टर आईडी I have used y underscore prediction variable. So that was quite confusing when you have plotted the result or वो understand करने के लिए. तो now I have used cluster ID only so that ये जो scatter plot हम बनाएंगे वो आपको समझने में आसानी होगी. So plt dot scatter plot. तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक्स एंड वाई देना होता है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट की एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, और उस हिसाब से आपको प्लॉट करना है. तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे मुझे चाहिए इनकम. इनकम मतलब क्या, जो एक्स है, दिस एक्स, इसका दिस फर्स्ट कॉलम जो भी है दैट इज द एनुअल इनकम, दैट इज कॉलम नंबर 0, और कॉलम नंबर 1 है दिस पेंडिंग स्कोर. तो कॉलम नंबर 0 मेरा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और कॉलम नंबर 1 जो है वो मेरा वाई एक्सिस पे होना चाहिए. तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कि ऑल रोज और ओनली जीरो कॉलम, और यहाँ पे अगर y के अगेंस्ट में x का ही ऑल रोज एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब होगा कि एनुअल इनकम जो कि जीरो कॉलम है वो x एक्सिस पे चला जाएगा, और स्पेंडिंग स्कोर विच इज द कॉलम नंबर 1 वो चला जाएगा y एक्सिस पे. लेकिन मुझे अलग अलग डॉट्स दिखाने हैं, तो मुझे सारे अगर मैं प्लॉट करूंगा तो सारा डेटा एक साथ प्लॉट हो जाएगा. इट विल बी प्लॉटिंग कंप्लीट डेटा एट वन गो, एट वन सिंगल टाइम. मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सारे रोज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही रोज चाहिए जहां पे क्लस्टर आईडी है इक्वल्स टू जीरो. तो जहां पे क्लस्टर आईडी इक्वल टू जीरो है वही सब मुझे रोज चाहिए, और उसी को मुझे प्लॉट करना है एज अ क्लस्टर 0. तो यहाँ पे भी क्लस्टर आईडी इक्वल्स टू 0 एंड द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ये हो गया. फिर हमें मेंशन करना है कि इसका कलर क्या होगा. तो कलर हम यहाँ पे ब्लू कलर लेते हैं फॉर द फर्स्ट क्लस्टर. देन साइज एस क्या होगा, तो जो भी हम लेने वाले, तो एस इक्वल्स टू लेट से 100 ले लेंगे. और एट द एंड उसका लेबल क्या होगा, लेबल हम देंगे क्लस्टर 0. ओके, एज यूजुअल
क्लस्टर 0 देंगे। इसी को हम रिपीट करेंगे। नाउ दिस इज फॉर द क्लस्टर 0 एज वी आर गोइंग टू हैव 5 डिफरेंट क्लस्टर्स। सो यहाँ पे 3, 4 एंड 5 क्लस्टर्स हो गए। तो क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 4। ओके, नाउ इन सब का साइज जो है 100 ही होगा। कलर अब अलग अलग होना चाहिए। दिस इज ब्लू, देन दूसरे का कलर ग्रीन कर देंगे, तीसरे का जो कलर है वो इट विल बी रेड, then let's say use the black color, and at the end let's use the pink color or the yellow use करता हूँ this time, yellow color। तो कलर आप अलग अलग दे सकते हो। क्लस्टर आईडी पहले का 0 होगा, दूसरा जो है उसका क्लस्टर आईडी 1 होगा, तीसरा है उसका क्लस्टर आईडी 2 होगा, this is the cluster id 3, and this will be having cluster id 4। Similarly same changes here, cluster id 1, cluster id 2, cluster id 3 and cluster id 4। Likewise we will be making and we will be plotting the clusters and उनके जो भी IDs है उसके हिसाब से। Now once we are having this plot, now as usual जैसे हम प्लॉट को किसी भी प्लॉट को हम टाइटल तो देते ही है, तो यहाँ पे भी हम टाइटल देंगे। सो टाइटल, और उसका कुछ तो टाइटल दीजिए। तो यहाँ पे लेट्स से क्लस्टर्स ऑफ कस्टमर इज likewise we can give, or the clusters of customers। okay, so that will be the title, and then उसका x लेबल भी दे सकते हैं। सो plt.x लेबल, तो x लेबल में हमारा है एनुअल इनकम, एंड दिस विल बी इन किलो डॉलर्स, दैट मीन्स कितने $1000 उसका इनकम है, जो कि अपना डेटा सेट है। एंड plt.y लेबल, तो इसके अंदर हमें मेंशन करना है कि स्पेंडिंग स्कोर क्या है उसका, तो स्पेंडिंग score of that, and at the end plt dot show। okay, so that's what we will be doing over here। तो ये अपना हो जाएगा टोटल ग्राफ। और बिफोर शो करें, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉरी लेबल्स भी दिए हुए हैं, तो हम उसका लीजेंड भी ऑन रख सकते हैं। तो plt डॉट लीजेंड, और आप उसमें चाहो तो ग्रेड वगैरह जो भी फंक्शंस हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में देखे वो सारे आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। एंड एज पर योर requirement or what kind of visualization you want, based on that you can make different changes in your graphs। okay, so that's it। तो यहाँ पे हम इसको अब रन करने को रेडी है। now it's ready to get executed। now let's run it। Now, after running, first of all, we'll be getting this important dendrogram, which takes some time to load because it has to consider 200 number of clusters at the beginning, and then it has to go on reduction, and finally it will come up with one single cluster। So as soon as I will be close this one, so it will be plotting the second important graph, and this is quite interesting। Now this is our the number of clusters I'm getting. So these are the yellow customers, green customers, this blue wale customers, black and red। तो what does it mean? तो यहाँ पे जो येलो कलर के कस्टमर्स है वो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका एनुअल इनकम भी कम है और उनका स्पेंडिंग भी कम है। तो वो स्पेंडिंग भी कम कर रहे हैं, एनुअल इनकम भी कम है। तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर वो कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है इसका मतलब उसका एनुअल इनकम भी ज़्यादा होगा, ऐसे कोई ज़रूरी है नहीं। और अगर किसी कस्टमर का एनुअल इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा परचेस करेगा, ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो एक पैटर्न है। तो कुछ कस्टमर्स है जिनका एनुअल इनकम भी कम है और डेफिनेटली स्पेंडिंग भी कम है, तो वो वाले कस्टमर येलो कलर से हमने हाईलाइट किए। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे है कि जिनका इनकम तो कम है लेकिन उनका स्पेंडिंग काफ़ी हाई है, तो उस वाले कैटेगरी में यहाँ पे ब्लैक कलर के जो भी कस्टमर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो वाले उस कैटेगरी के हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनका एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है और उनका स्पेंडिंग भी अच्छा खासा है, दैट मीन्स मॉडरेट है, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग भी मॉडरेट है।
तो इस कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, डेंस है क्योंकि ये ज़्यादा कस्टमर्स है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनका इनकम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो स्पेंड काफ़ी कम कर रहे हैं, वो खर्चा ही नहीं कर रहे, स्पेंडिंग काफ़ी कम कर रहे हैं, तो वो परचेस नहीं कर रहे ज़्यादा आइटम्स हमारे शॉप से। तो ऐसे कस्टमर का इनकम तो ज़्यादा है, rich people are there but they are not purchasing the significant amount of goods। तो वो वाले कस्टमर्स यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन्ड है। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका इनकम भी अच्छा है, ज़्यादा है, हाई इनकम, एंड their spending score is also high। All such customers are marked by this red color। So this is how this graph can classify the customers visiting to your shopping mall और आपके शॉप में जो भी कस्टमर, जो भी किसी का भी शॉप होगा। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे आप, अगर आपको पता, आपके पास डेटा सेट है किसी भी मॉल का या फिर किसी भी शॉपिंग साइट का, तो आप उसमें से ये कस्टमर्स फाइंड आउट कर सकते हो कि विच कस्टमर्स आर having the high income and less spending, which customers are having the moderate income and moderate spending, which customers are having less income but high spending, which customers are having less income and less spending। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग मेथड्स आप, अलग अलग ऑफर्स आप प्रमोट कर सकते हो। नाउ वन प्रॉब्लम विद द hierarchical clustering is that you will not be able to predict for the new data। So that's the, as far as this clustering is concerned, ये hierarchical clustering का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे नए कस्टमर का, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग नहीं है। तो पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है कि पार्टीशन बन जाती है क्लियर कट, तो नया कस्टमर आएगा तो वो कौन से बॉर्डर के अंदर जाएगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, so that's the one of the disadvantage over the k means clustering for this hierarchical clustering, कि हम यहाँ पे जैसे कल हमने नया इनपुट लिया और उसको प्रेडिक्ट कर लिया, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर नहीं होगा। लेकिन एक एडवांटेज भी है कि जो के का वैल्यू है वो हमें इनिशियली पता होना ज़रूरी नहीं है। डेंड्रोग्राम यूज़ करके क्लियर आइडिया निकल के सामने आते हैं कि कहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं, तो वो हम लेटर ऑन डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं। आप जितने नंबर ऑफ क्लस्टर चाहिए उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बना सकते हो, एंड इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी नीड होगी, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके कितने बनने हैं। एंड ऑफ कोर्स द डेंड्रोग्राम मेथड विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो एक तो नंबर ऑफ क्लस्टर दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड द डेंड्रोग्राम मेथड। तो दोनों से हम करेंगे। अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे तो प्री डिटर्मिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। So let us quickly revise these steps, very simple steps we have followed in today's session। The number one is loading the required packages। So we have loaded NumPy for array handling, Pandas library for the dataset loading, Matplotlib for the plotting the result or for the visualization। Next, we have loaded our dataset, which is mallcustomers.csv, and we have used this file in the previous practical as well, and we have printed some data from it by the head function। After that, we have extracted the independent variables, which are nothing but the column number 3 and 4, nothing but annual income and the spending score। And next is finding the optimal number of clusters। So as I said, it can depend on the business requirement, but this time we have used the dendrogram structure to find out the optimal number of k or the clusters। So this time we got 5, and for that purpose the linkage we have used between the data point, and in order to calculate the linkage distances we have used the ward's formula or the ward method। And at the end we have plotted this dendrogram, and after plotting the dendrogram we have seen how many clusters can be formed and number of clusters we have seen, and the tree like structure we have witnessed। The next is fitting the hierarchical clustering model and generating the dependent variable or the output variable or the labels or the IDs। So here we have cluster IDs, that's what we have estimated from that, and for that purpose agglomerative hierarchical clustering algorithm we have used,
and number of clusters we have defined 5, as this was the number which we got from the dendrogram plot. And then we have fitted our model or trained our model on this, and at the end we got this cluster id. And if the cluster ids are 0, that means it is a different group of customer. So according to that, we have extracted those customers from our x, and we have plotted them by using this thing. So we have plotted this customers where the cluster id is 0, so we have used blue color to plot such customers. If the cluster id is 1, we have used green color to plot such customers, and so on. Now one of the important things is that as per as the last practical concern, we have used the centroids, but that is not centroid based method. It is all about tree like structure, so centroid cannot be there, but in the previous case there was a centroid. Now next important thing is that after doing this, after having the scatter plots, we have given some title, x label, y label, and legends to the graph, and at the end we got some beautiful graph as that of the previous one, and quite similar result as that of previous example we have got. And this is a very small project we can consider, where we have done this analysis for some mall customers. Okay, so in the next session we will be considering some different topics. So we'll conclude with today's session, but we will wait in the chat section for your queries and doubts.